All right, seems like I'm live. Hi everyone, my name is Anupinda Singh and welcome to my live stream. Today I just thought of कि मैं थोड़ा सा AWS के costing के बारे में थोड़ी सी बात करूं and और इसके अलावा एक और बात करूं कि उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं बिना कोई भी एक रिसोर्स होस्ट किए हुए. So primarily, this video is basically for those people who are trying to learn AWS. They are on the beginner or beginner stage and who wants to understand कि किस तरह से इसकी बजटिंग की जा सकती है और कौन सी सर्विसेज को आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली टेस्ट आउट कर सकते हो, राइट? सो primarily in this live I'm going to demonstrate you how you can use calculator.aws, which is basically a kind of budget estimations website जहाँ पे you will be able to just see and select the services which are available on AWS और उसके correspondingly आप कितने टाइम के लिए अगर कोई रन करते हैं सर्विस तो उसका ओवरऑल बजट क्या होगा, ईयरली बेसिस और 3 ईयरली बेसिस और ऑन डिमांड बेसिस, राइट? सो we'll try to cover this in next 10-15 minutes and बस इतना सही लाइव करेंगे, not more than that. So it's been so many months I've done any live. So let's get started with the thing and I have the comment section on this side. If you write anything, I will be able to see it live and ट्राई कि मैं आपके उन कमेंट्स का जवाब साथ साथ में दे पाऊँ या एंड ऑफ द सेशन पे दे पाऊँ, राइट? सो अगर आपको कोई क्वेश्चन तो यू कैन राइट ओवर देयर एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद दैट. सो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स गो टू द AWS calculator.aws. So let me just share my screen. So here we go on the screen we have right now. So let's say AWS पे मुझे एक EC2 इंस्टेंस रन करना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली देखना है कि मेरा कॉस्ट कितना आएगा, राइट? सो आई विल गो टू calculator.aws website and that's once I hit AWS I will be able to go and check on that website. So अगर आप जैसी वेबसाइट खुलेगी you will find कि on top right corner there are few links. One says कि create account, AWS account, and from here you can basically work it out. I think somebody is calling. Okay, so so sorry for that. Sometime it happens. So here you can see create an estimate, and this create an estimate basically gives you the way to just go and follow that wizard. अब वो उस wizard में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? Basically you have the AWS calculator, उसमें service add करेंगे in the first stage, बताएंगे कौन सी service के लिए आपने calculate करनी है उसकी cost. Then you will try to do some of the configurations for that so that you should be able to get some estimate around it, and then finally आपकी cost estimation corresponding to all those configuration it will display. So quickly let's create the estimate. So once I click on create estimate you will see कि मेरे को ये estimate page पे ले आता है and इसको दो ways में आप use कर सकते हो, search by location type and search all services, right? So दोनों way में आप इसको workout कर सकते हो, दोनों way में difference कोई खास नहीं है. If I click on search all services you have this search tab, and if you say कि मैं EC2 services के regarding I wanted to do a search, you can just quickly type in, और S3 service के लिए करना है you can just simply type in, lambda services के लिए करना है you can simply type in that, right? Similarly by location और search all services में difference ये होता है कि आप region first point पे select कर सकते हो. अब अगर आप यहाँ देखोगे चूज लोकेशन टाइप, तो आप रीजन, लोकल जोन, वेवलेंथ जोन, इन तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हो. ब्रॉडली अगर हम इनका डिफरेंस बताएं तो रीजन ज्योग्राफिकल लोकेशन है, लोकल जोन इज बेस्ड ऑन कि आप अपनी रिडंडेंट आप अपनी लेटेंसी कम करने के लिए यूजर के क्लोजेस्ट होस्ट करोगे, और वेवलेंथ जोन बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में टैप करता है. एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट आपका जो रीजन होता है, सो आई एम श्योर यू आर अवेयर अबाउट कि AWS के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स है, राइट? इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट जस्ट गो एंड read about it. So you can choose any one of the region, and based on that whatever the costing is going to be there you will be charged for that. So ये primarily आपके पास initial selection criteria है. So मैं region choose करूंगा और region choose करने के बाद नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट
दैट इज US East 1 लोकेशन, वो चूज करूंगा. अब मैंने शुरू में बोला कि मैं EC2 के लिए आपके लिए कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहता हूँ, तो EC2 आई विल टाइप एंड यू विल फाइंड कि EC2 के रिगार्डिंग जो सर्च में मेरे पास है दैट इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड बाय डिफॉल्ट. फर्स्ट आई एम गोइंग टू क्लिक बिकॉज Amazon EC2 के रिगार्डिंग मुझे कॉस्टिंग estimate कर दिया है. So right now I'm not going to create any resource at this point of time. I am going to just put in the configuration जो मैं चाहूँगा और उसके correspondingly मेरी जो costing है वो display होगी. So I click on config and once I click on config, you will see कि मेरे पास एक sub step 1 आ गया, that is add service, and step 2 है configure service. तो before I go and try to fill in the information, मैं आपको इसके sections बता देता हूँ. सबसे पहला जो section है that is you need to give the name और region आप change कर सकते हो अगर required है. तो let's say I'm going to give test estimate for June 16, right? So today is June 16 and I'm going to just do the test over here, right? So that's what I'm going to have in this particular case. Then उसके बाद second चीज आप देखोगे EC2 की specifications, and these specifications are regarding its tenancy, operating system, what kind of instance you wanted to have. Then comes as a payment option. After that, it comes as a elastic block store, what exactly you wanted to host on. Then in case you want to have a monitoring, तो वो आ जाएगी. Data transfer अगर आपने करना है वो आ जाएगा, उसका कॉस्ट आ जाएगा. और इफ देयर इज एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन दैट यू आर ट्राइंग टू पुट इन, वो भी आ सकता है इसमें, राइट? सो नाउ लेट्स गो टू द टॉप एंड फिल इन ऑल द डिटेल्स क्विकली वन बाय वन. सो EC2 स्पेसिफिकेशन में अगर आप देखोगे टेनेंसी है. सो टेनेंसी बेसिकली क्या होता है, दैट इन व्हाट वे यू वांट टू यू नो अवेल दी सर्वर. शेयर्ड इंस्टेंस रखना है, डेडिकेटेड इंस्टेंस रखना है, डेडिकेटेड होस्ट रखना है. सो शेयर्ड इंस्टेंस और होस्ट में फर्क क्या है? इंस्टेंस और होस्ट में फर्क ये है कि इंस्टेंस एक वर्चुअल मशीन है, होस्ट बेसिकली आपको एक वर्चुअल, आई वुड नॉट से वर्चुअल, फिजिकल सर्वर एलोकेट होगा क्लाउड पे, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग. सो व्हेन यू लुक एट दिस शेयर्ड इंस्टेंस एंड डेडिकेटेड इंस्टेंस, सो शेयर्ड मींस आप एक ही फिजिकल होस्ट पे अपनी वर्चुअल मशीन होस्ट करो जहां पे कोई और भी कर रहा होगा, एंड उसकी कॉस्टिंग हमेशा कम होगी. डेडिकेटेड में यू विल गेट अ डेडिकेटेड होस्ट और उस पे आपकी ही बनाई हुई VMs जो है वो होस्ट होंगी, whereas डेडिकेटेड होस्ट इज वो पूरा का पूरा फिजिकल मशीन ही आपको allocate हो जाएगा. So I'm going to go for the shared instance because generally we do that. Then Linux operating system you can choose. Now there are plenty of operating system around here in the list. So Linux, Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux, Linux with SQL standard, and so on. So based on your requirement, you can choose your operating system. Again, I'm making it clear कि हम अभी कोई भी इंस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता के कॉस्ट एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया लिनक्स, देन कांस्टेंट यूजेज करनी है. आपको पता है कि थ्रू आउट द डे आपका वो चलता रहेगा और आपको कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे उसको 100% तक, मे बी सम परसेंटेज. उसके बाद डेली स्पाइक है, राइट? सो डेली स्पाइक कैसे हो सकता है? सो अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, लेट्स से आप एक स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेबसाइट रन कर रहे हैं. सो आपकी स्टॉक रिलेटेड वेबसाइट पे स्पाइक्स कब आएंगे? नॉर्मली वर्क डेज पे आएंगे और बिटवीन द पीरियड ऑफ 9 AM टू 5 PM, जितनी देर मार्केट ओपन रहता है, राइट? या वीकली स्पाइक हो सकता है, जैसे वीकेंड पे स्पाइक्स आ रहे हैं तो कितना होगा, राइट? मंथली स्पाइक्स हो सकते हैं, जैसे ई-कॉमर्स की सेल्स होती हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए. तो उस बेसिस पे what you can see is you can define your kind of workload की कैसा आएगा. So I will say कि constant होगा और number of instances means कितने virtual servers आप कर रहे हैं. तो right now मैं एक ही virtual server के साथ इसकी estimation देख रहा हूँ. So जैसे जैसे आप configuration change करोगे ना, यहाँ bottom left corner में आपको दिखेगा कि you are able to have an estimated price for this. So इसमें दो options होती हैं, total upfront cost और दूसरी होती है total monthly cost. Total upfront cost क्या है कि आप अगर इंस्टेंस को बुक कर लेते हो लॉन्गर पीरियड के लिए, उस केस में अपफ्रंट कॉस्ट आती है. वेयरएज अगर आप ऑन डिमांड अभी चाहिए कभी भी बंद कर सकता हूं, तो मंथली कॉस्ट उसमें आ जाती है और ओवरऑल कॉस्ट भी आ जाती है. तो यहाँ पे आप यू कैन सी कि इसमें चेंजेस कैसे होंगे, राइट? सो जैसे जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे वैसे वैसे चेंजेस होते रहेंगे. सो राइट नाउ इंस्टेंस, हमने बोला एक इंस्टेंस, बट उस इंस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? कॉन्फ़िगरेशन में CPU, मेमोरी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नेटवर्क क्या यूज करेंगे वो सारा आ जाता है, राइट? सो अगर आप यहाँ पे देखोगे डिफॉल्ट जो है
T4G Nano जो है वो आपके पास इंस्टेंस नेम है. देयर आर मेनी इंस्टेंसेस दैट आर देयर. आई होप आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा बताया उसके बारे में. देन फैमिली टाइप, देन उसमें कितने vCPUs होंगे और उसमें कितनी रैम होगी. अगर यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँ, राइट, सो इंस्टेड ऑफ T4, राइट, इफ आई टाइप इन T4G, उसमें नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये सारे हैं मेरे पास, राइट. इसी तरह से मेरे पास और इंस्टेंसेस भी हैं जैसे T3, T2, राइट, एंड सो ऑन. सो देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंस्टेंसेस दैट आई कैन चूज. सो लेट्स से मैं कह रहा हूँ T4G डॉट, अब माइक्रो की जगह मैं इसमें चूज करता हूँ एक्स लार्ज, राइट. सो डॉट एक्स लार्ज is what I'm going to use. So जैसे ही मैंने इसको चूज करना है, you will find that there is a change in the total cost. So depending upon कि कितना मेमोरी यूज कर रहे हो, कितना vCPU यूज कर रहे हो, कितना उसका ऑन डिमांड कॉस्ट पर आ रहा है, तो वो आपके पास यहाँ पे आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन बढ़ जाते हैं. सो अगर मैं मान लीजिए इसकी जो कॉस्ट है दैट इज $0.344 है फॉर आवर. अगर इसी चीज को मैं चेंज करके नैनो कर देता हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे कि उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, दैट इज $0.0042, राइट. सो पर आवर के हिसाब से. एंड देन जैसे ही मैं उसको चूज करता हूँ आपकी कॉस्ट कम हो जाती है. सो दिस इज व्हाट इज द एस्टिमेशन दैट यू आर ट्राइंग टू डू बेस्ड ऑन कि आपके क्लाइंट ने आपके पास रिक्वायरमेंट क्या रखी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए AWS क्लाउड के ऊपर. So let's say I go with, instead of nano, I'll go with small, right? So small के केस में मेरा कोई ज्यादा estimation नहीं जाता. It going to cost me around $6.313 in a month. ये सिर्फ अभी तक इंस्टेंस हमने चूज किया. अब मान लीजिए आपको पता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं that is going to be used for certain specific period of time, 1 साल, 2 साल, 3 साल. उस केस में आपके पास पेमेंट ऑप्शंस होती है. सो पेमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या है? एक तो कंप्यूट सेव पेमेंट प्लान है जहां पे मैं 1 ईयर या 3 ईयर के लिए प्लान कर सकता हूं. अगर मैं 3 ईयर के लिए प्लान करता हूं और मैं सारी की सारी पेमेंट अपफ्रंट कर देता हूं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप 3 ईयर्स के हिसाब से देखो तो टोटल कॉस्ट आपके पास अराउंड $200 है अभी तक जितनी आपने कॉन्फ़िगरेशन दी है. सो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, 3 ईयर्स मतलब 36 मंथ्स, राइट. सो $200 डिवाइडेड बाय 36 मंथ्स is going to be $5.5 per month, right? So that's going to be my total cost, which is going to be levied अगर मैं cost saving के लिए जाता हूँ. Whereas अगर मैं EC2 instance saving plan के लिए जाता हूँ, where we can have more discounts on it, 3 years के लिए all upfront अगर मैं जाऊँगा, then it is going to be 165. और इसमें partial upfront भी कर सकते हैं. So partial upfront में you pay some amount and then after that on monthly basis you pay something, right? उसके बाद ऑन डिमांड बेसिस पे भी, जो कि हम बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं, ऑन डिमांड बेसिस पे भी मेरा यूजेज के बेसिस पे आई कैन एस्टिमेट कि मेरा यूजेज 50% का रहेगा एंड बेस्ड ऑन दैट आई मे हैव सर्टेन कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ थिंग, राइट. सो यूटिलाइजेशन पर मंथ के हिसाब से आपने देखा तो उसकी कॉस्टिंग इतनी आ गई. एंड देन स्पॉट इंस्टेंस प्राइसिंग. सो स्पॉट इंस्टेंस प्राइसिंग क्या है? आप तब यूज करोगे जब AWS के पास रिसोर्सेज फ्री है. And this gives you the highest cost saving on the particular instance, right? So मैं अभी on demand के लिए चला जाता हूँ या EC2 saving के लिए चला जाता हूँ और partial upfront payment देता हूँ, right? या all upfront दे देते हैं. So this is what is going to be the cost for it. Details देखनी है तो वो details आपको at least यहाँ पे कुछ बता देता है. Then going on to the further part, so other purchasing options are also there which you can go and look into it on your own, right? So that's what you get. Then उसके बाद अब हमने CPU बताया, मेमोरी बताई, नेटवर्क बताया. नेटवर्क भी exactly नहीं हो, CPU और मेमोरी बताया, and then हमको उसकी स्टोरेज बतानी है, right? So हार्ड ड्राइव क्या स्टोरेज रखोगे, right? So किस टाइप की स्टोरेज है? Based on what type of storage you are going to add. If it is SSD, then it has certain speed associated with it, IOPS जिसको बोलते हैं. Whereas there is another thing, HDD. So spindle motor based जो होती हैं उसकी cost के basis पे आप इसको define कर सकते हैं. So SSD will always be costlier than the HDD, right? So let's say मेरा operations जो है 16,000 operations per second का volume अगर मेरा आ रहा है, in that particular case अब आपको देखोगे कि आपका total estimation जो है month के लिए वो $65 होगा, right? अब इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम करने के लिए ऑन डिमांड पे रखते हैं. जितनी देर मैंने कोई भी कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं डाला था, राइट, लेट्स से मेरा जीरो ऑपरेशन है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम
$13 whereas जैसे ही मैंने 16,000 operations per second के हिसाब से बोला, ये बोला कि भाई $38.63 I'm going to charge you, and that's what's the price, right? Whereas if I go and choose some other set of SSD, then you can see 16,000 IPS. I would not say IPS; it's a storage basically. So units of units is going to be in GB, and it's going to cost you in terms of the USD part. So जितना आप यूज करोगे, हम हमेशा कहते हैं कि AWS जो है वो बेसिकली पे एज यू यूज मॉडल पे काम करता है. सो व्हाटएवर द टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू यूज, द कॉरेस्पॉन्डिंग values are going to be corresponding money is going to be charged to you. So ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है. अगर मैं यही चीज थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HDD के लिए चला जाऊं और लेट्स से मैं 16,000 GB के लिए जाऊं तो मेरी कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/3 हो जाती है, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्पीड, व्हाट cache memory and everything you are going to get, based on that you are going to have the cost. Snapshots is basically आप अपने running server को कितना बैकअप करना चाह रहे हो, राइट? सो इफ यू आर अवेयर अबाउट स्नैपशॉट, दैट्स गुड. नॉट अवेयर अबाउट बैकअप, मान के चल सकते हो. जस्ट इन टाइम बैकअप होता है कि अगर मान लीजिए अभी आपने कोई चेंजेस किए, आपका स्नैपशॉट हो गया, आपने 1 घंटे तक चेंजेस करते रहे और उसमें से कुछ करप्ट हो गया और आपका सर्वर रन नहीं कर रहा, यू कैन गो बैक टू द स्नैपशॉट एंड यू कैन गेट दैट स्नैपशॉट ऑन, राइट? सो डेली करना है, ट्वाइस करना है, डेली आरली करना है, दैट यू कैन डिफाइन, और वीकली और मंथली. अगर मैं वीकली करता हूँ, देन what sort of amount of changes I'm going to have in terms of GB. So let's say 300 GB is going to be there every time, and based on that, snapshot cost is going to be added to this, right? So this is what you get in terms of your overall structure, right? And similar to this, there is a monitoring as well. So agar aapko monitoring enable karna hai, what sort of in and out is happening, all that stuff can be done, and based on that, your additional cost is going to be added to it. Then there is a data transfer cost. अब ये data transfer cost inbound की zero होती है, outbound की actual में cost करती है. So data transfer, let's say internet पे use करना है, let's say 1600 terabytes per month मैं use करना चाह रहा हूँ inbound traffic, there is no cost. पर जैसे ही मैं 1600 terabyte, I'm going to put it on the inter-region data transfer. That means outbound, sorry, not outbound. It's the inter-region data transfer I'm going to do between the regions of the AWS. Then it is going to cost me more. And in case अगर मैं outbound traffic करता हूँ और वो मैं outbound traffic करता हूँ internet के लिए, and at that point of time, let's say मैं 100 terabytes per month की बात करता हूँ, and then the cost is going to be added to it. So this is how, based on what your network usage is going to be, आपकी on-demand cost बढ़ती जाएगी, right? And if there is any other additional information that you wanted to put as an estimate, that can be done into this, right? So in this particular case, now if you go for EC2 instance saving, right, and all upfront costs, thoda bahut cost pe difference aa jayega, and that's how basically it has been done, right? So this is how you can just take any service and do the estimation on that. So once this particular part is done, what you can do is you can save and add service. अगर आप इसके बाद और services को add करना चाह रहे हो, और save and view summary कर सकते हो. So अगर मैं save करता हूँ, so save करने पे it is going to take me towards the 12-month base cost, and at this particular point of time, जो भी आपका monthly cost है उसको इसने 12 से multiply किया, and that is going to be getting your yearly cost, and based on that, your estimation is going to be created over here, right? So इसी तरह से अगर मैं एक और service add कर देता हूँ, let's say मैं service add करता हूँ S3 की. So उसको configure करता हूँ, configure करने के साथ S3 standard data transfer के लिए जो भी मेरा standard storage है, let's say 100 GB is going to be there, right? And all what I'm going to list out is ongoing monthly call is put copy or list. So let's say I'm going to do a amount of requests. Sorry, 13,000 requests is going to be there. 13,000 requests is going to be there for the get and select. The amount of data that I'm going to put over here is 100 GB, and amount of data scanned for the select is going to be 100 GB per month. Based on that, whatever the estimation is going to be made, it has been given, and save and view service. So जो भी उसका additional cost है, that has been added to this particular set. So this is how you can create. Now, if you want to have this particular information to be spotted in your account, you can just basically go to your account service. So you can just simply either export the information in terms of PDF,
can share it with anyone, which can be done. So if I say is export as PDF, I'll do OK on this. So at this particular point of time, it is going to store the information on the public server, and that's what the acknowledgement is going to be asked for you. And in this particular case, the PDF has been stored. And if I open it for you guys, and in that case, you can see the estimation has been prepared, and you can share this information or PDF with your client, right? So this is how you can basically do an estimation with respect to the service. As many services you wanted to add, you can make that work for yourself. So this is how the overall estimation cost has been done, right? So if there is anything you want to ask me with respect to this whole demonstration, I'm here for you. Otherwise, feel free to like and subscribe to my handle. I would really love to connect with you. Leave a comment over here so that I should be able to know that this live has really helped you out or not. And rest of the, if you want to join on our AWS Learners community, you can just simply go to, let me just write it for you, where I can write, I would say, yeah, so you can just simply write learn AWS. So this is my community where I can come and join on our WhatsApp channel so that we should be able to exchange some valuable information with each other. And that's where I think we can conclude our session. So right now, there are no comments till now. Great. Yeah, so there's no comment. So pricing is an important. Yes, definitely pricing is a very important aspect for AWS part. If you can estimate what is going to be the cost, you can really architect the thing around. This is just एक simple सा, we just estimated something और उसको हमने put कर दिया estimate वाले sheet में, but you can just really spend some good time on it, और उसके basis पे you can check that what are the real estimates that you can make around, and then you can share it. You can use it for yourself, or आप अपने client के साथ भी share कर सकते हो. I think that is where things can work for you, right? So this is where I think we can conclude our session. So thank you very much for joining on this live. Hope you and I will get some more connections. So please do follow my handle, and hope to see you again for this particular session. So thank you very much. See you in next live. Bye-bye.